Move on to the theory of tides. मैं बेसिकली आपको जो टाइड की थ्योरी है ये कुछ एक वीडियोस दिखाऊंगा and from those videos we will understand what are these tides, how the tidal calculations are done. So shall we move on to the tidal theory? 75% of the Earth's surface is covered by water. That is, it comprises of seas and oceans. Beta, is the video, picture and sound coming fine? Yes, sir. Loud and clear. Yes, sir. Okay, beta. Now, Earth, when surrounded by water, under normal circumstances, you would not expect the level of the water changing with time. That means depth at a given place under normal circumstances would be expected to remain unchanged. However, we also know that Earth has two celestial bodies in its close proximity, the Moon and the Sun. Because of their close proximity to the Earth, they exert gravitational pull on Earth. And this gravitational pull, which is exerted as per Newton's law of gravitation, is directly proportional to the mass of the two bodies involved and inversely proportional to the square of distance between them. Okay. So beta, just go through these points carefully one by one. Let me know any doubts which come in your mind. Yes, sir, no problem. Very good, beta. Let's go ahead. Square of distance between them. Earth, being much closer to Moon than Sun, experiences higher gravitational pull of the Moon despite Moon's smaller mass, because gravitational pull is inversely proportional to the square of the distance between the bodies. The gravitational attraction of the Moon causes the oceans to bulge out in the direction of the Moon and in the opposite direction, that is the far side, though the bulging in the opposite direction is of slightly lesser extent. We can see this in the diagram that's coming up. This is the Earth. We have the Moon. The Moon exerts gravitational pull on the Earth. This causes the bulging of the water in the direction of the Moon and in the opposite direction. Why? Because the water here is pulled towards the Moon. So what do we experience? That the level in this part has become higher, and so is the level in this part also, though to a slightly lesser extent. So this bulging on higher bulging in the direction of the Moon, we call it as high water, and in this one in the opposite direction is called as low-high water. We also know that Earth rotates from west to east. So as the Earth rotates, different points on the surface of the Earth shall be passing these areas of high water, and also these areas in the perpendicular direction, the areas of low water, and accordingly these places shall experience the change in the level of the water bodies, and this is going to be periodic. Why? Because the Earth rotates at a uniform rate, and therefore we have these two as the areas of high water, and in the perpendicular direction to the direction of the Moon we have the areas of low water. And since the Earth rotates at a uniform rate, therefore the places experience periodic rise and fall of water level in the large water bodies. Okay, so go through these points, beta. Look at this diagram carefully. Take your time. Let me know the doubts coming in the mind.
सर जो अपोजिट साइड है उसमें बल्ज आउट क्यों हुआ सर? ओके बेटा इसको ध्यान से समझना. Now you see we have the moon here. Moon is exerting a gravitational pull on the earth as well as the water. अर्थ पे जो वाटर है और जो अर्थ है इन दोनों पे मून अपना ग्रेविटेशनल पुल जो है ये एक्सर्ट कर रहा है. अब लेट्स डिवाइड द अर्थ इनटू 3 पार्ट्स. वन पार्ट इज द वाटर विच इज इन बिटवीन द मून एंड द अर्थ, दिस पोर्शन, इसको एक पार्ट मान लेते हैं. सेकेंड पार्ट मानते हैं अर्थ को, दिस इज द सेकेंड पार्ट. एंड थर्ड पार्ट मानते हैं वाटर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द अर्थ. ओके, यू कैन कंसिडर देम A, B and C. Water towards the moon, earth in the middle and water away from the moon. ये 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया बेटा आपने माइंड में? यस सर. अब मुझे ये बताओ बेटा कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल किस चीज पे लगेगा? सर जो मून की डायरेक्शन में होगी सबसे पहले. वेरी गुड, वाटर विच इज टुवर्ड्स द मून, राइट? यस सर. सो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस पार्ट पे लग रही है, वाटर टुवर्ड्स द मून. सो ये मून की तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होगा, करेक्ट बेटा? यस सर. वेरी गुड. अब मुझे बताओ कि इन तीनों में से सबसे कम ग्रेविटेशनल फोर्स किस पार्ट पे लगेगी? सर जो सबसे दूर होगी, जो मतलब दूसरी साइड का वाटर है. वेरी गुड. सो वाटर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द मून experiences minimum gravitational pull and जो अर्थ है which is in between experiences medium in between gravitational pull. सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल लगा है वाटर विच इज टूवर्ड्स द मून. सो आप देखोगे ये सबसे ज्यादा बल्ज आउट कर गया है मून की तरफ. अर्थ पे मीडियम पुल लगा है, मीडियम पुल, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है. So you see earth slowly also moves towards the moon but not much. और सबसे कम ग्रेविटेशनल पुल लगा है which is the water opposite to the moon. इस पे सबसे कम ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हुई है. So that is why this water almost stays where it is. अब ये वाटर मून की तरफ सबसे ज्यादा गया है, अर्थ भी थोड़ा सा मून की तरफ गई है, और ये वाला जो वाटर है which is away from the moon, it has moved negligible, or you can say it has not moved at all. That is why you see there is a high water in this area also, क्योंकि मून ने अर्थ को भी तो अपनी तरफ पुल कर लिया है. Did you get it बेटा? यस सर. Okay, very good. Shall we move ahead now beta? Yes sir. Okay, all right. Now why there is bulging in the opposite direction is very simple to understand. We can divide this entire mass into 3 components. One is the mass of the water on the side of the moon. Second is the mass of this solid part of the earth, and the mass of the water in the opposite direction of the moon. Now this water being closer to the moon will experience maximum gravitational pull. Some slightly lesser extent than this would be experienced by earth because the center of the earth is at a slightly greater distance. So that means this water will be pulled more towards the moon compared to what earth is being pulled, and hence this bulging gets justified. This water body on the opposite side is even at a greater distance than the center of the earth, and therefore this shall experience relatively lesser or the minimum pull. So now earth's solid mass experiencing greater gravitational pull, this water mass experiencing lesser gravitational pull, earth gets slightly more displaced towards the moon, pulled more towards the moon, causing a bulge on the far side as well. So same thing explained beta. Did you understand it now? Yes sir. Okay, very good.
So it is the different magnitudes of the gravitational pull on the water body towards the moon and water body on the far side, and the solid mass of the earth, which is the cause for high water on the side of the moon as well as on the opposite or the far side. This periodic rise and fall in level of water bodies, large water bodies, is what we call as tide. Though moon's gravitational pull is the main cause of tides, as just discussed, the sun's gravitational pull cannot be completely ignored and does have a modifying effect on the tides. Accordingly, the height of tide shall depend upon the resultant gravitational pull experienced by the earth, that is the resultant of the moon's gravitational pull on earth and the sun's gravitational pull on the earth. The resultant of these two gravitational pull shall depend upon how sun and moon are oriented in the space with respect to the earth. That means it shall depend upon the angle subtended by the centers of the sun and moon at the center of the earth, and what we have learnt in navigation and termed in navigation as the elongation of the moon. The tide heights are maximum when sun and moon are in a straight line, aligned in a straight line. That means the gravitational pulls are along a straight line, whether they are on the same side of the earth or they are on opposite sides of the earth. That means this will happen when the elongation of the moon is either 0 degrees, that means moon is in conjunction with the sun, and that is occurrence we all know is the occurrence of new moon, or the elongation of the moon becomes 180 degrees, that means moon is at opposition, that is the event or occurrence of full moon. This tide, when the gravitational pulls of both the bodies are aligned in a straight line, this tide height, which is maximum, is called as the spring tide. The tide heights being minimum when the gravitational pull of the sun and the moon act perpendicular to each other. This is when the elongation of the moon is either 90 degrees east or 90 degrees west, that is the moon is at quarters, the first quarter or the third quarter. This tide is referred to as neap tide. Okay. So beta, just go through these points one by one. Let me know the doubts coming in the mind. सर जो प्लैनेट्स हैं उनकी वजह से कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं होगा? बेटा उनकी वजह से पुल तो है, बट यू सी एक तो प्लैनेट्स का जो मास है कंपेयर टू द सन इट इज मच लेसर. सो दैट्स व्हाई प्लैनेट्स का जो अफेक्ट है वो सन और मून के अफेक्ट से बहुत कम है. If you compare the planets to the moon, their distance is much greater as compared to moon. So that is why planets का जो gravitational pull है वो हमें बहुत ज़्यादा affect नहीं करता and the effects are negligible. इसमें बेटा क्या डाउट आ रहा है आपको? Is there specific doubt? सर ये जो लाइन है, this is when elongation of moon is either 90 degree east or 90 degree west. Okay. आपने बेटा अभी सेलेस्टियल नेविगेशन में ये elongation वाला टॉपिक किया है? Okay. Don't worry. This elongation will come when you do the planet system in celestial navigation. अभी आगे डायग्राम में मैं ब्रीफली आपको समझा दूंगा कि ये elongation क्या होती है. I will tell you what is this 90 east or 90 west elongation. अभी आगे एक डायग्राम आएगी, I'll explain. Okay, sir. Okay. Shall we move ahead now, beta? Yes, sir. Okay. Very good. This tide is referred to as neap tide. Let's reinforce the
concept of spring and neap tide through this diagram. We have the sun, we have the earth. Sun's rays travel in straight line, as can be seen in the diagram. Moon revolves around the earth in its orbit, so we have the orbit of the moon. When the moon is at this place, it is in conjunction with the sun. The entire illuminated face of the moon is facing away from the earth, so no moon shall be visible on the earth, and hence the condition for new moon. So here we have the moon in conjunction, it's new moon, and obviously it's a condition for spring tide because moon and sun are in a straight line as seen from the earth. So ये जो कंडीशन है बेटा, जब सन और मून एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इट हैपन्स ऑन द डे ऑफ द न्यू मून. इस केस में दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. तो आप मुझे बताओ कि टाइड जो है वो हाई होंगे यहाँ पे या लो होंगे? हाई होगा सर. द वेरिएशन, टाइडल वेरिएशन विल बी मैक्सिमम इन दीज कंडीशंस. इन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग टाइड. नाउ जो इलोंगेशन की बात हम कर रहे थे पिछले स्लाइड में, इलोंगेशन का मीनिंग होता है बेटा एंगल एट द सेंटर ऑफ द अर्थ contained between the sun and any other body. In this case the other body is the moon. So अगर आप अर्थ के सेंटर से सन और मून के बीच का एंगल निकालो, can you tell what will be the angle in this case? 0 degrees. Sir, 0. Very good beta. Yes sir. Angle would be 0 degrees. So we call that on the day of the new moon, the elongation of the moon is 0 degrees. So 0 degree elongation जब होगी तो maximum tide होगा, spring tide होगा. That means the tidal range would be maximum. High tide will be very high, low tide will be very low. Now elongation अगर आपको नहीं भी याद रखना है, even then टाइड्स का टॉपिक बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा. इलोंगेशन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए अभी यहाँ बताया गया है, बट प्रैक्टिकली वी डोंट नीड इट इन टाइड्स. ओके, सो डोंट गेट बॉदर्ड कि भाई अगर इलोंगेशन समझ में नहीं आएगा तो टाइड भी पता नहीं चलेगा. इलोंगेशन इज नॉट यूज्ड इन टाइडल कैलकुलेशन एनीवेयर. सर यही अर्थ अगर अपोजिट साइड में होती तब भी इलोंगेशन मैक्सिमम होता है ना, और वो जो टाइड है वो हाई होती है. You mean to say when the moon is here? Yes sir. That's right बेटा. अगर मून यहाँ पे होता सो उस केस में इलोंगेशन 180 हो जाती बेटा. एंगल एट द सेंटर ऑफ अर्थ बिटवीन सन एंड मून वुड बी 180, एंड उस केस में भी टाइड्स हाई ही होंगे, मींस स्प्रिंग टाइड ही होंगे. ओके सर. ओके, अभी हम देखेंगे डायग्राम में और भी 4 लोकेशन पे मून को रखेंगे. वी विल सी. Then moon revolves around the earth in its orbit, reaches this place where now the angle subtended at the center of the earth by sun and moon is 90 degrees, and you have the condition of quadrature. Only quarter moon will be visible from the earth. Why? Because this is the illuminated face. Only this much part will be visible from the earth. That means 1/4 of the total moon surface. And it's a condition for neap tide. So in this condition beta, you see the sun and the moon are at right angles. दोनों 90 डिग्री के एंगल पे आ गए हैं. Elongation is 90 degrees. एंड इसको नेविगेशन टर्म्स में हम लोग क्वाड्रेचर भी बोलते हैं. सो इन दिस केस द टाइडल रेंज विल बी वेरी लेस, मींस द हाई टाइड विल नॉट बी वेरी हाई, द लो टाइड विल नॉट बी वेरी लो, क्योंकि सन और मून की जो फोर्स है ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ऐड नहीं कर रही है, ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रही है. सन जो है ये पानी को अपनी तरफ खींच रहा है, मून पानी को अपनी तरफ खींच रहा है. सो देयर एनर्जीज आर डिवाइडेड, दे आर वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर. सो ऐसे केस में टाइडल वेरिएशन बहुत कम होगी. इसको हम लोग बोलते हैं नीप टाइड.
So any doubt up to here, beta? No, sir. Very good, beta. Very good. Let's proceed ahead. Then moon reaches in opposition. Entire illuminated face is towards the earth. We have the condition for new full moon, and it's again a condition for spring tide. Why? Because the earth, from the earth, the sun and moon are in a straight line, though they are on opposite directions. So opposition, full moon, spring tide. So this is also clear, beta. This is called as opposition, when the sun and moon are in opposite direction, and we will be able to see the full moon. That's why this is called as the full moon day. And on this day also we will have a spring tide, because even though sun and moon are in the opposite direction, but their effect on water is similar. Okay, the bulges will be towards the sun and towards the moon. Both the bulging parts of the water will be towards the sun and towards the moon. So we will again have a spring tide in this particular situation. Okay, very good. Moon revolves further, reaches here. It's again in quadrature. It's quarter moon that is visible, and it's condition for neap tide. So whatever we discussed a while back can all be remembered and explained through this particular diagram. Okay, so just have a good look at this diagram, beta. Let me know any doubts which come to the mind. Okay, clear, beta? Up to here is clear? Yes. Very good. So we will give it a break here. Can you please explain this again? This quadrature, quarter moon, neap tide. So this one cannot understand. बेटा, ओके. अब बेटा जो क्वाड्रेचर वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि मून और सन 90 डिग्री के एंगल पे हैं. अगर आप अर्थ के सेंटर पे देखो, क्वाड्रेचर का मतलब होता है 1/4, 1 क्वार्टर ऑफ 360. सो अगर आप अर्थ के सेंटर से देखो, सन की डायरेक्शन और मून की डायरेक्शन ये 90 डिग्री के एंगल पे है ना बेटा? यस सर. दैट इज वाई इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेचर. अगर आप बिल्कुल नीचे वाले मून को देखो तो यहाँ पर भी क्वाड्रेचर लिखा हुआ है. ओके. दूसरी चीज जो यहाँ पे लिखी गई है वो है क्वार्टर मून. क्वार्टर मून का मतलब है कि हमें मून का कितना पोर्शन इल्यूमिनेटेड दिखाई दे रहा है. सो ये पूरा मून है. पूरे मून में से हाफ मून तो डार्क रहता है हमेशा. हाफ मून विजिबल है और उस विजिबल पार्ट का भी आधा हिस्सा हमें दिखाई देगा अर्थ से अगर हम देखेंगे तो. इसीलिए इसको बोला जाता है क्वार्टर मून. सो क्वार्टर मून इज ऑल्सो क्लियर बेटा? यस सर. ओके सर. और तीसरी चीज जो यहाँ पे दी गई है वो है नीप टाइड. नीप टाइड का मतलब है कि टाइड की जो रेंज है ये बहुत कम होगी. मींस हाई टाइड बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा और लो टाइड बहुत ज़्यादा लो नहीं जाएगा. वेरिएशन ऑफ द सी लेवल विल बी वेरी लेस. अब वो लेस क्यों होगी? लेस इसलिए होगी, सन जो है ये कोशिश कर रहा है कि इस पोर्शन में हाई वाटर होना चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे. सन की डायरेक्शन में और सन के ऑपोजिट इन दोनों जगह पे हाई वाटर होना चाहिए. मून यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि मून की तरफ
at this location or opposite to moon at this location, यहाँ पे हाई वाटर होना चाहिए। अब दोनों पानी को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो पानी का लेवल ज़्यादा वेरी नहीं करता, क्योंकि सन और मून दोनों में लड़ाई हो रही है, दोनों की पावर एक दूसरे को फाइट करने में वेस्ट हो जा रही है और पानी के लेवल में वेरिएशन नहीं हो रही है। दैट इज बाय नीप टाइड। So did you understand neap tide, beta? Yes, sir. Now both clear spring and neap tide, sir. Very good, beta. So we will stop it here for today.